the consciousness that already exists within us. Now let us see what Shishya Lakshana is. If Guru Tattva is the light, then the disciple must become a worthy lamp to receive that light. The scriptures describe several qualities of an ideal disciple. Shraddha, which is faith born of understanding, not blind belief, but trust that grows through experience. Nishtha, which is steadfastness. It reminds us that spiritual growth comes through consistency, not occasional enthusiasm. Vinaya or humility, we have heard Guruji say this multiple times, is especially important. It allows us to receive correction without resistance and to keep learning. Seva purifies the ego and teaches us that service itself is a worship. Jigyasa is the sincere longing to know the truth, and Atma Pariksha is the willingness to constantly observe and refine ourselves. As Guruji often reminds us, the purpose of learning is not to know more, but to become better. Next slide. Now let us see what Guru Shishya Parampara is in our Mahavidyalaya. One of the greatest blessings of being part of this Mahavidyalaya is that Guru Shishya tradition is not just taught, it is lived. Through daily sadhana, scriptural study, reflection, assignments, and seva, we are gradually encouraged to transform ourselves. Whether we study Saundarya Lahari, Sri Chakra, Mahavidyas, or Lalita Sahasranama, Guruji consistently reminds us that knowledge must become experience. Personally, I have realized that assignments are not simply academic exercises. They encourage reflection. Parayana cultivates discipline, sadhana nurtures our inner transformation, and seva purifies our ego. Knowledge is respected, but experience is valued even more. Every lecture becomes an invitation to practice. Every correction becomes an opportunity to grow. This, to me, is the beauty of our Mahavidyalaya. Here, learning is not measured by how much we know, but by how much we live. Next slide. The next slide, Ma. Now let us see the journey of a Sishya. As you can see from the slide, it beautifully illustrates the journey of every disciple. We begin with curiosity. Then curiosity inspires us for learning. Learning must then become a practice. Practice develops discipline. Discipline gradually transforms us, and transformation opens us to grace. And grace finally leads us towards self-realization. When I reflect on this journey, I realize that every stage is important. We cannot skip from knowledge to transformation. The bridge between them is sincere and consistent practice. As a quote on the slide says, knowledge informs, but practice transforms. My reflection as a student. If I may share one personal reflection, my journey in Mahavidyalaya has taught me that spirituality is not about collecting more information. It is about becoming quieter within, learning to listen before speaking, observing before reacting, practicing with sincerity, accepting correction with gratitude. I have also come to appreciate that every assignment, every class, and every interaction is part of our sadhana. For this understanding, I remain deeply grateful to Guruji, Purnima, and all our acharyas. Next. The resolution from my side on this Guru Purnima, rather than making grand promises, I pray for the strength to practice these simple resolutions, to cultivate Shraddha, to remain steadfast with Nishtha, to serve with humility, to live the teachings rather than merely speak about them, to become little by little a worthy disciple. The greatest offering at the Guru's feet is our own transformation. I would like to conclude with a prayer from my heart. May we always remain receptive to the Guru's guidance.
May we have the humility to learn, the courage to transform, and the wisdom to live what we are taught. On the sacred Guru Purnima, I offer my heartfelt pranams to revered Guruji, Tarunima, the entire Guru Paramparā, Ishama, and all my fellow sadhakas. Thank you. Shri Mātre Namaha, Shri Gurubhyo Namaha. Thank you, Saraswati Ma, for your thoughtful reflections. I now invite Sandhya Saptasagar Ma to talk in Kannada. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಈ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸತ್ಸಂಗದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಶಾನ ಪ್ಲೀಸ್ PPT. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನಾನಿವತ್ತು ಗುರುತತ್ವ ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ನನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಸರ್ವ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸದಾಶಿವ ಸಮಾರಂಭಾಂ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಮಧ್ಯಮಾಂ ಅಸ್ಮದಾಚಾರ್ಯ ಪರ್ಯಂತಾಂ ಒಂದೇ ಗುರು ಪರಂಪರಾ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಜಿಯವರಿಗೆ, ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ತಾರುಣಿಮಾ ಅವರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸಾಧಕ ಸಾಧಕಿಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಗುರು ತತ್ವ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಕ್ತಿ. ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೊದ್ಲು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ, ಗು ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನ, ಅಂಧಕಾರ, ರು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಗುರು ಅಂತ. ಅವರು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನ ನಿವಾರಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಅವರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರೋದು ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ, ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಸಹಾಯಕ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತವ್ರು ಗುರುಗಳು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಬದಲಾವಣೆ, ಆತ್ಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮನ್ನ ದೈವದತ್ತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಓದ್ಬೋದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂತವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ಗುರು ಮುಖೇನ ಅದು ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಗುರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ಈ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೇನಿದೆ, ಅದು ಸಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರು ಮುಖೇನ ನಾವೇನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಸಾಧಕನ ಜೀವನವನ್ನ ರೂಪಾಂತರಗೊಳಿಸ್ತದೆ, ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್.
ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೈವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಮಹೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸ್ ಅವರದ್ದು ಒಂದು ದೋಹೆ ಇದೆ, ಗುರು ಮತ್ತೆ ಗೋವಿಂದ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಬೀರ್ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದನ ಬಗೆಗಿನ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಗುರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಬೀರದಾಸರು. ಶಿಷ್ಯ ಲಕ್ಷಣ, ಶಿಷ್ಯನ ಗುಣಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸತತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಅಚಲವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನಯ, ನಮ್ರತೆ, ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಿನಯ, ನಮ್ರತೆ, ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ, ಈ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ, ಗುರುಕುಲ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಿಂದ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದೇನು, ದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿ ಈ ತರದ್ದನ್ನ ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ತರದ್ದೇನ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ ಅ ಮೆಟೀರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಯಮಿತ ಸಾಧನೆ, ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದೇ ನಿಯಮಿತ ಸಾಧನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಾಧನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವರು ನಮಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಆದ್ರೂ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ, ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಗುರು ವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ, ನಮಗೆ ಅದು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಹೌದಾ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ನನಗೂ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗುರು ವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ, ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಏನೇ ಒಂದು ಹಂತವನ್ನ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸಾಧನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ ಪರಿಪೃಷ್ಣೇನ ಸೇವಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವಿನಯದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದು, ಗುರುವಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಗೌರವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು ಅಂತ ಕೇಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೇಳೋದು ಸರಿಯೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾವ್ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬಂದಿರೋಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆಗಿರೋಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಬಂದೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರುವನ್ನು ಸಮೀಪಿಸ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಗುರುವಾಕ್ಯ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಗುರು ಮತ್ತೆ ಭಗವತಿ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮುಂದೆ ಶಿಷ್ಯ ಏನ್ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ರಿಸೆಪ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಮಗೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಖಾಲಿ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತು, ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಯಾವತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ತು, ಅವತ್ತು ಕಲಿಕೆ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್. ಇನ್ನು ಚಂಡಿ ತಂತ್ರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್
ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಅಧ್ಯಯನ. ಆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಆಚರಣೆ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಓದಿದ್ವಿ ಬಿಟ್ವಿ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಇರಬಹುದು. ಗುರುಜಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಮಂತ್ರ, ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದು, ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಏನಂತ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಉಚ್ಚಾರಣೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರ ಪಠಣೆ ಕಲಿಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಧನೆ, ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಸಾಧನೆ, ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಟು ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಆತ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನಮಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಹಂತವನ್ನ ನಾವು ದಾಟಿ ಬಂದ್ರೆ ಗುರು ಕೃಪೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಆಗತ್ತೆ. ಆಂತರಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವೇನಿದೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಶ್ರೀಪುರ ಏನು ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ, ನಮ್ ಗುರುಗಳು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬಿದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯ ಮಾರ್ಗ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾರ್ಪಣಮಸ್ತು, ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಮಾತ್ರೇ ನಮಃ. Thank you, Sandhya Ma, for your insightful presentation. We now move to our third presentation. I now invite Vidyārthi Raghavendra, who will be sharing his reflection in English. Namaskaram Shri Guru. Namaskaram with my fellow faculty members, my fellow students of Shri Chandi Tantra Mahavidyalaya. Guruji, thank you for providing me an opportunity to share my personal journey of this in this Mahavidyalaya on this auspicious Guru Purnima day. Thank you on that. So before I start on the slides, I just want to just walk you through my journey. How did I start my journey with Mahavidyalaya? So I connected with Guruji for some support on the Mahavidyalaya and ended up being a student with him. So I don't know anything about, or I didn't knew anything about the Mahavidyas, the Sri Vidya, the Durga Saptashti or anything. However, it's been a year now I'm completing in this Mahavidyalaya, learning about Lalita Sahasranama, Durga Saptashti and various things. If I look back, one thing which Guruji keeps telling me, reminds me, is that it's not you who decides to learn this Vidya, it's her who decides that okay, you should learn this. That's very much true with me, and I think all your being here is very, very much true with you all. With this, let me proceed with the slides. Ishaji, can you please take it to the next slide? Thank you. Let's talk about what is Gurukula learning, right? So Gurukula learning is a living ecosystem meant to transform the disciple via mind, subtle body, and emotional field. In Gurukula, learning happens through proximity, the presence, and the instruction of the Guru. In Gurukula, knowledge moves through a life cycle, like Sandhya Ma talked about it: Shravana, Manana, and Nitidhyasana. Gurukula is an alchemical rather than merely a pedagogical. In Gurukula, a disciple is a vessel meant to hold and transform the mantra, yantra, and shakti. Through structure, discipline, and daily consistency, Gurukula creates a safe container for a disciple where the transformation unfolds.
Next slide, please. Let's talk about the Guru Tattva. Who is Guru? Guru is not a role. He is a Tattva. As per Tantra Shastra, Guru is a Tattva. Guru is a state of consciousness. Guru is the doorway through which the disciple meets Parambika herself. Guru is a pathway, he is an embodiment, portal, and a divine mother in human form. The three Shaktis embodied by the Guru, the Icha Shakti, the compassionate will to uplift the disciple, the Gnana Shakti, the direct realization and spiritual mastery, the Kriya Shakti, the power to initiate, guide, and transform. Next slide. Let's talk about the qualities of the true Guru, right? So, as per Purnima Tantra Shastra, there are 32 qualities which are divided into 6 categories on these 2 slides. A Guru is the one who is self-realized and has a wisdom, the scripture wisdom. He is pure from an inner and an outer purification, a mastery of senses. He is compassionate and service-oriented. Next slide. He is humble. He is free from ego. He is truthful and steadfastness. He is devoted and a skilled guide for the disciple. We can go to the next slide. Now, how do we identify a Sadguru versus Kohaka, the false Guru? Again, as through the Kularnava Tantra, which talks about Sadguru's qualities, who is a desireless, compassionate, firm only for the upliftment of the disciple. He guards mantra secrecy, initiates only when a disciple is ready. He is detached yet fully engaged in the service. He is grateful to his own Guru and the lineage. Let's talk about Kohaka, the false Guru. A false Guru is always greedy and impatient for the results. He is egoistic, fame and attention seeking, displays siddhi for the show, controlling and manipulative in nature, lustful or self-serving in intent. Next slide. Let's talk about our first Guru, the Adi Guru, who was the first initiator of yoga and the Tantra Shastra. Dattatreya was beyond caste, creed, and convention. Dattatreya redefined the renunciation. He mentioned living identification with the world is important, not living the world itself. In sadhana, this is very important, where we have to live in this world. However, we have to live the identity with the world and not living the world itself. Dattatreya also represents the union of Shiva and Shakti. Hence, he is called as Sahaja Avadhuta, a natural and spontaneous. From a Dattatreya's consciousness emerges the Natha lineage, which talks about Deha Shuddhi, Prana Shuddhi, Chitta Shuddhi, Guru Shuddhi, and Shiva Shuddhi. Dattatreya path unites Jnana, Yoga, and Bhakti, a practical model for modern sadhaka like you and me, who are torn between worldly duty and spiritual longing. Next slide, please. Now let's come to the quality of an ideal Shishya. Again, from the Kularnava Shastra, there are 45 qualities that have been written for an ideal Shishya. These 45 qualities have been divided into 8 categories for simplicity. An ideal Shishya should have a faith, devotion, and loyalty. He should have a purity, which is a body and a mind purity, and a discipline. He should be humble, free from ego. He should have an emotional maturity and stability. Next slide. He should have a relationship harmony with the co-sadhakas and group with whom he is learning. He should have a courage and resilience. He should develop inner depth and receptivity, develop the integrity and grounded living. Go to the next slide. Now let's come to the journey of a student. There is always a journey which is always a challenge and which is in turn a cleansing process in the journey of sadhaka. Let's talk about Deha Shuddhi, right? So it's a bodily purification which talks about physical discipline, posture, cleanliness. The chorus layer is the steadied fast.
Prana Shuddhi, energetic purification, breath and vital energy are regulated, restlessness of the prana is calmed. Chitta Shuddhi, the mental purification, emotional residue, old patterns, and reactivity are burned away. Guru Shuddhi, the relational purification, ego surrenders to guidance, resistance to correction dissolves. Shiva Shuddhi, the final recognition, where what remains is recognized as already whole, the self was never bound. Next slide. Now, this is common challenges in the life of a sadhaka, and to some extent, these have been my own challenges in this journey. So I'll just pen it down as here. A doubt. There are six commonly faced challenges in the path of sadhaka, so I just captured them here. The first one being the doubt and discouragement. Early setbacks test sadhaka, shraddha. This friction is not failure, it burns away casual curiosity and reveals genuine intent. The old emotional residue, kriyas, unexpected tears, old memories, or heat may surface. This is chitta shuddhi in motion, stored reactivity leaving the system. Ego being corrected, guidance that stings the ego in manahani, dignity being loosened, not diminished, so the disciple can receive more. Obstacles and the delay, vignaha or obstacles are described as inevitable, not exceptional. Vigna Sahana, the resilience, is built precisely by meeting them. Isolation or loneliness, periods of mauna and antarmuktava can feel isolating, yet they are exactly where inner churning begins. The last one, the plateau, the apparent plateau, when nothing seems to be happening, starya or a steadiness is quietly consolidating gains beneath the surface. Next slide, please. I captured some of the frequently asked questions to the new students who are joining this semester. Uh, so this will help you with some ready answers on the sadhana path. So the first question, do I need a guru to make a spiritual progress? The simple answer is yes. Second one, what if my teacher corrects me and it stinks? Correction is aimed at upliftment. That's it. How do I know if teacher is genuine? Again, refer to the Kularnava Shastra. It has already captured how to identify a genuine teacher or a guru. I feel like I am not progressing. Is it something wrong? Not necessarily. The apparent plateau is kicking in, which basically means the consolidation phase is going on. Next slide. Why does the tradition emphasize the secrecy? It's because to protect energetic integrity. What should I do when practice feels difficult or uncomfortable? Difficulty is treated as shrama or an effort rather than a stop sign. Can I be a sincere seeker without formal tantric initiation? Absolutely yes. Is renunciation required to grow spirituality? As Guru Dattatreya mentioned, you don't need to renounce the world, you just need to renounce the identity with this world. Next slide, please. Key takeaway, I just mentioned two here. Again, the first one, which is very important, which has been helping me till date, is a complete surrender yourself to the Guru. This basically means listen to whatever he says, follow his guidelines, the mantra dikshas, the chanting, the assignments, the reflections, Facebook post, and other things, which whatever in my capacity I could do, I've been doing that, and it's helping me. The second one is trust Parambika and trust the process of transformation. Why do I mention that? Is because as I mentioned in the previous slide, there will be challenges in the path of sadhaka, and whenever you are in doubt, whenever you feel uh, that you're not progressing or other things, just remember this. She is guiding you, and you have to follow and trust the process of transformation by her. With this, I thank you, everyone. Thank you, Shri Guru. Thank you, Vidyārthis. Thank you, Vidyārthi Raghavendra, for your insightful presentation. Our next presenter is Vidyārthi Gayatri Shamsundar, who will be sharing her reflections in Hindi language. Over to you, Gayatri Ma.
श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु शिष्य तत्व पर मेरा आज मनन मैं आपको समर्पित करना चाहूंगी। श्री चंडी तंत्र महाविद्यालय में मेरा 1 वर्ष और मेरी सीख। नमस्कार श्री गुरु जी, आदरणीय आचार्य तारुण्य ईशा महाविद्यालय के सभी समन्वयकों एवं आचार्यों को मेरा सादर। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर मैं श्री चंडी तंत्र महाविद्यालय के प्रति अपनी हृदयपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। इस पवित्र गुरुकुल में मुझे केवल शास्त्रों का अध्ययन ही नहीं सिखाया, बल्कि सीखने, साधना करने और स्वयं को धीरे धीरे रूपांतरित करने का अवसर भी प्रदान किया है। आज मैं एक विद्यार्थी के रूप में इस गुरुकुल में बिताए अपने प्रथम वर्ष की कुछ सीख अपने मन को से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जब मैं 1 साल पहले महाविद्यालय में आई थी, तब मैं एक बिल्कुल नई और अपरिचित विद्यार्थी थी। मुझे न देवी के बारे में अधिक ज्ञान था, न ये पता था कि देवी और श्री गुरु जी ने मेरे लिए क्या संजो कर रखा है। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है कि मैं 1 वर्ष केवल शास्त्र सीखने का नहीं, बल्कि स्वयं को धीरे धीरे बदलने का समय आ रहा है। महाविद्यालय के इस पवित्र वातावरण में रहकर गुरु शिष्य तत्व को धीरे धीरे समझना शुरू किया है। मैं केवल पढ़ने या सुनने का ही श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि हर कक्षा, हर हर असाइनमेंट जो हर एक क्लास के हर एक मिनट में असाइनमेंट देना होता है, सेवा के अवसर जब भी महाविद्यालय में कोई भी उत्सव मनाया जाता है, उस सेवा में गुरु जी हमें भी भागीदारी बनाते हैं। तो हर सेवा के अवसर और आत्मचिंतन के माध्यम से अनुभव करने की बात है। धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि शिष्य को उस ज्ञान को ग्रहण करने योग्य भी बनाते हैं। जैसे राधे गुरु जी ने बताया अभी, एक पात्र make you, गुरु जी makes you a vessel when you can get all this education जो भी सीख है, जो भी सीखा है, वो गुरु निकल जाता है। You are taught in a way that you become a partner to observe all that is Guru wants to do. सबसे बड़ी सीख यही नहीं कि केवल सुनने से ज्ञान जीवन का हिस्सा नहीं बनता। जब उस पर मन होता है, when you reflect, अभ्यास होता है, when you study, और उसे जीवन में उतारने का प्रयास होता है, that is practice every day, तभी बहुत बेहतर रहता है। पिछले 1 वर्ष में मैंने महसूस किया है कि जो बातें पहले केवल जानकारी लगती थी, just information, वो सब अब मेरे जीवन और साधना का एक हिस्सा बनने लगा है। महाविद्यालय में रहकर यह भी समझ में आया है कि आध्यात्मिक विकास किसी शॉर्टकट से नहीं होता। गुरु ऑलवेज सेज दैट नो शॉर्टकट्स। हर गुण को धैर्य पूर्वक विकसित करना पड़ता है। विवेक से वैराग्य आता है, वैराग्य से मन शांत होता है, फिर क्षम, दम, श्रद्धा, स्थिरता और अंत में मोक्ष की सच्ची इच्छा जागती है। एक गुण दूसरे गुण का आधार बनता है। इससे मुझे समझ आया कि परिवर्तन धीरे धीरे होता है, लेकिन स्थायी होता है। इट्स परमानेंट फॉर श्योर। जब मैंने एक शिष्य गुरु पर मनन किया तो महसूस हुआ कि इस मार्ग पर केवल ज्ञान बढ़ता है, ज्ञान ही नहीं बढ़ता, उद्देश्य नहीं, बल्कि स्वयं को योग्य बनाना है। विनम्रता, श्रद्धा, अनुशासन, शुद्धता, ईमानदारी, दया, धैर्य, साहस, उदारता और दूसरों से ईर्ष्या न करना, ये केवल पढ़ने की बात ही नहीं, बल्कि रोज अपने जीवन में उतारने का अभ्यास है। इन्हें देखकर अब मैं दूसरों का मूल्यांकन नहीं करती, बल्कि स्वयं को परखने का प्रयास करती हूँ। लाइक स्टूडेंट अभी जिन्होंने पहले बात की, उससे कंपेयर योरसेल्फ विद हाउ बेटर यू आर फ्रॉम द डे बिफोर। So am I better? Am I doing it right? I'm continuously assigning and correcting, reflecting upon the learning is what Guru always, assures us to do. इस 1 वर्ष में मैंने यह भी सीखा कि गुरु जी की हर सीख, हर सुधार और हर जिम्मेदारी हमारा विकास ही कराती है। महाविद्यालय ने मुझे सिखाया कि सीखना केवल कक्षा तक ही सीमित नहीं है, ये सेवा में, व्यवहार में,
आत्मचिंतन में और नियमित साधना में भी चलता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैंने समझी वो यह है कि गुरु केवल शास्त्र में नहीं सिखाते, गुरु हमारे व्यक्तिगत वो आधार बनाते हैं जिसका शास्त्र का ज्ञान टिक सके। यदि आप बात उसको ना हो तो ज्ञान बिखर जाता है। गुरु की कृपा से वही ज्ञान धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बन जाता है। आज महाविद्यालय में 1 वर्ष पूरा होने पर मेरा हृदय देवी और श्री गुरु के प्रति कृतज्ञता से भरा जाता है। मैं आज भी स्वयं को एक प्रारंभिक विद्यार्थी ही मानती हूँ, लेकिन अब मेरे पास एक दिशा है, एक आधार है और एक गुरुकुल है जहाँ हर दिन कुछ नया सीखने का और स्वयं को बेहतर बनाने का अवसर जरूर है कि मैं हमेशा निरंतर रहूं और ये सीखने की भावना कभी कम ना हो। हर सुधार को कृतज्ञता से स्वीकार करूं और धीरे धीरे एक योग के शिष्य बनने का प्रयास करती हूँ। श्री मात्रे नमः। सदैव श्री गुरु जी की सेवा में। मैं विद्यार्थी गायत्री शास्त्री। Thank you, Gayatri Ma, for your reflections. We now invite Vidyārthi Jayalakshmi Hegde to share her presentation in English. Over to you, Jayalakshmi Ma. Namaskaram, Shri Gurubhyo Namaha, Shri Mātre Namaha. Guru Murti Smare Nityam, Shakti Murti Stataiva Cha, Shiva Shakti Swarupam Cha Dhyaye Sadguru Mandalam. The meaning of the shloka is, let my heart forever remember the form of the Guru. Let me constantly remember the divine form of Shakti. I meditate deeply on the entire mandala of true masters, who are the living embodiment of Shiva and Shakti unified as one. Namaskaram, respected Guruji, Acharyas, mentors, and Vidyārthis of our Mahavidyalaya. Guru Purnima is traditionally celebrated as Vyasa Purnima, marking the birth anniversary of Maharishi Vedavyasa, who structured the ancient scriptures. By gathering here on this online platform, we connect our consciousness to that very same unbroken Guru Paramparā. I wish all my friends and Vidyārthis a very purposeful Guru Purnima. May we become a perfect instrument to carry forward the Guru's vision. On this sacred occasion, my heart overflows with gratitude as we unite in the different corners of the world, gathered together under the compassionate guidance of our shared spiritual home. Our focus today is deeply to reflect upon the Guru Tattva and the Shiksha Lakshanas of our Mahavidyalaya. Let us contemplate how the sacred, ever-present reality of the Guru's grace, when met with the pure and sacred, ever-present reality of the seeker, transforms this digital space into an intimate altar of a divine transmission. In this sanctuary of learning, distance dissolves into devotion, and every screen becomes a mirror reflecting the timeless wisdom of the line of the Acharyas. As we sit in our homes, connecting online, we must turn our gaze inward and ask ourselves, are we truly becoming worthy vessels to hold the sacred nectar? To understand how to become a worthy vessel, we must first look deeply at the divine source guiding us and truly understand the Guru Tattva. To understanding the Guru Tattva. In the word Guru, the syllable Gu signifies the darkness of our limitations, and Ru, which signifies the compassionate light of wisdom. The Guru is truly that supreme consciousness who swallows our darkness of our ignorance, flowing uninterruptedly through us and anchor us to our ancient Guru Paramparā. Today, we honor the Guru Tattva, the universal principle of spiritual guidance. The Bhagavad Gita reveals how we connect with this cosmic principle through Pranipatena, that is humility, Pariprashnena, asking sincere questions, and Seva, selfless service. Ultimate embodiment of this principle is Lord Dattatreya. He is the Guru Tattva itself, the divine intelligence that awakens wisdom through any medium. When an external teacher is absent, the inner Dattatreya guides us directly through intuition and spontaneous clarity. But from the tradition of Sri Vidya, we learn
that Dattatraya's 3 heads symbolizes the perfect balance of 3 cosmic powers, Ichha Shakti, Jnana Shakti, and Kriya Shakti. True transformation happens when our intent, wisdom, and actions align. Furthermore, Guru Tattva provides an integrated sadhana by uniting the 3 parts: yoga for discipline and inner strength, Vedanta for clarity and non-duality, Tantra, recognizing our physical embodiment as sacred. Ultimately, the scriptures teach us that spirituality does not mean running away from the world, but awakening within it. The external Guru exists solely to awaken the inner Guru residing in our hearts. Let us honor this external wisdom today by living Lord Dattatraya's ultimate whisper: be free, but be loving. Renounce, but also rejoice. Now we go through the Shishya Lakshanas. For the divine transmission of Guru Tattva to operate within us, it requires a fully prepared vessel. Because an online environment lacks physical supervision, a Shishya's internal qualities matter more than ever. The scriptures outline clear characteristics which we must actively embody. Let us look at the foundational pillars every sadhaka must cultivate. Bhakti. Devotion is a very life source of our spiritual journey. Guru Bhakti is our absolute unwavering surrender to the human form of Guru, who acts as a visible, compassionate mirror of our inner soul. Devi is our intense, unwavering love. Devi Bhakti is our intense, unwavering love for the unseen cosmic reality, the primordial mother who governs all existence. The true Shishya understands that these 2 devotional paths are entirely inseparable, manifest as Guru Mandala Rupini, revealing that Guru is not separate from the cosmic source. Niyama Palana. This means honoring our daily practices, attending classes regularly, maintaining routine and purity. Discipline in timings and performing rituals and following the scriptural protocols without compromise. Shravana and Manana Shakti. The ability to listen with absolute focus, capturing the subtle energetic vibration behind the words, followed by deep contemplation of those principles until they become our own logic. This makes the disciple inwardly strong and alert. Mauna. By practicing Mauna, we stop leaking our vital energies, calm our mind, and prepare the inner vessel to receive higher wisdom. Shraddha. A deep, wide trust in the Shastras, in the Guru, and in the transformative power of the mantra. Following daily spiritual routine with discipline, devotion, and sincerity. Tyaga, willing to sacrifice comfort, ego, habits, and attachments that obstruct our spiritual path. Fearlessness. Facing fear not as an enemy but as a teacher, the Shishya becomes unafraid of darkness, solitude, inner silence, and even death. My deepest gratitude to Guruji. On this intense and complex path of Tantra Shastra, the seeker can easily stumble or feel overwhelmed by its mysteries. But Guruji, your unshakable support is our anchor. I express my deepest gratitude to our revered Guruji. Guruji's compassionate eyes sees each one of us. You wrap us in your silent prayers, your spiritual protection, and invoke the Divine Mother's blessings over our lives. Guruji, you did not just give us knowledge, you breathed faith in our doubts. Every spiritual milestone I cross, every ounce of clarity I find is a direct reflection of your immense patience, boundless life, and unceasing prayers. Thank you, Guruji, for the constant guidance during our online sessions. Your belief in my potential has completely changed and transformed my journey and has anchored my sadhana in the right direction. Our truest expression of gratitude is the absolute obedience to our tradition, to the tradition of our Mahavidyalaya and preserving its purity. Now, living these principles daily. In our Mahavidyalaya, we strive to live these principles
daily. We honor the Guru Mandala through our daily choices by maintaining high online discipline, by attending classes regularly, by reflecting, quietly protecting the confidentiality of our practices, and treating our education as a living, breathing sadhana. On this Guru Purnima, let us turn our gaze inward. Let us pledge to refine our character, shed spiritual pride, and genuinely embody the traits of a true disciple. By doing so, we clear the path so that the cosmic rays of the Guru Mandala Murti can flow through us completely unobstructed. With immense gratitude and absolute surrender, I lay myself and my spiritual journey at the lotus feet of our beloved Guruji. Once again, I wish everyone a profoundly transformative Guru Purnima. May the boundless grace of Guru Mandala dismantle our illusions and establish us in eternal truth. Thank you, everyone. Shri Gurubhyo Namaha, Shri Mātre Namaha. Thank you, Jayalakshmi Ma, for your very thoughtful presentation. Our next presenter, Vidyārthis Senthil Kumar, will be presenting his reflections in Tamil language. I welcome Senthil ji. Shri Gurubhyo Namaha. Moshigavahana Modagahasta Chamaragarna Vilambida Sutra Ramaduba Mageswara Vigna Vinayaka Pada Namaste Om Bhakti Cha Vidmahe Brahma Patme Cha Dhimahi Tanno Mani Prachodayat Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Gurubhyo Namaha. Shri Chandi Tantra Mahavidyalaya உலகளாவிய நேரலையில் இணைந்திருக்கும் ஆன்மீக அன்பர்களுக்கும் மதிப்பிற்குரிய ஆச்சாரிய பெருமக்களுக்கும் மூத்த வித்யார்த்திகளுக்கும் சக வித்யார்த்திகளுக்கும் என் பணிவான நமஸ்காரங்கள். நம் பாரத புண்ணிய பூமியில் எண்ணற்ற ஆன்மீக கேந்திரங்கள் இருந்தாலும் தாந்திரிக நெறியையும் ஸ்ரீ வித்யா உபாசனையையும் அதன் தூய்மை மாறாமல் தற்காலத்திற்கு ஏற்ப கடத்தும் ஒரு உன்னதமான ஆன்மீக ஜீவ நாடியாக நம் மகா வித்யாலயம் திகழ்கிறது. இந்த மங்களகரமான குரு பூர்ணிமா நன்னாளில் நம் மகா வித்யாலயத்தில் குரு தத்துவமும் சீட லட்சணமும் என்ற தலைப்பில் சில தத்துவ பகிர்வுகளை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தேவி மகாத்மியம் காட்டும் குரு தத்துவம். பொதுவாக நாம் குரு என்று குறிப்பிடும் போது அது ஒரு தனி மனித உடலையோ அல்லது வெளிப்புற வடிவத்தையோ மட்டும் குறிப்பது அல்ல. மந்திர சாஸ்திரங்களின்படி குரு என்பது ஒரு தத்துவம். அது பிரபஞ்ச பேராற்றலில் பற்றாத வழிகாட்டுதல். குரு என்றால் அறியாமை எனும் இருள். குரு என்றால் அதை நீக்கும் பேரொன்று. நம் வித்யாலயத்தில் போதிக்கப்படும் சாக்த மற்றும் தாந்திரீக மரபின்படி குரு தத்துவம் என்பது வெறும் ஏட்டுக்கல்வி அல்ல. அது சாதகனின் அக இருளை அகற்றி அவனுள் உறைந்திருக்கும் ஆன்ம ஒளியை உனக்கு அடையாளம் காட்டும் ஒரு உன்னத ரகசியமாகும். நம் மகா வித்யாலயத்தின் உயிர் நாடியாக விளங்கும் தேவி மகாத்மியம் நாராயண ஸ்ரீயில் தேவர்கள் அன்னையை சரணடைந்து அவளே சகல புத்திக்கும் ஞானத்திற்கும் இருள் நீக்கும் குரு தத்துவத்திற்கும் பிரத்யட்ச வடிவம் என்பதை இவ்வாறு போற்றுகிறார்கள். சர்வசிய புத்தி ரூபேன ஜனஷ்ய ஹிருதி சம்ஸ்திதே ஸ்வர்காப வர்க்கதே தேவி நாராயணி நமோசுதே. அனைத்து ஜீவராசிகளின் இதயங்களிலும் புத்தி வடிவமாக வீட்டிருப்பவளே, உலகில் இன்பங்களையும் பிறவிப்பினியை அறுக்கும் உன்னத மோட்சத்தையும் வாரி வழங்குபவளே, உன்னை நாராயணியே உன்னை வணங்குகிறேன் என்று போற்றுகிறார்கள். நம் மகா வித்யாலயத்தில் இந்த தத்துவம் எவ்வாறு பிரதிபலிக்கிறது என்றால், இதயத்தில் அமர்ந்து புத்தியை தூய்மைப்படுத்தும் இந்த ஞான ஒளியே குரு தத்துவம். இங்கே குருநாதர் நமக்கு ஒரு வெளிப்புற ஆசிரியர் மட்டுமில்லாமல் தேவி மகாத்மியமும் காட்டும் இந்த அதே நாராயணி தத்துவத்தின் வாழும் சான்றாக நம் புத்தியை தெளிவித்து கர்ம வினைகளின் பிடியில் தவிக்கும் ஆன்மாக்களை வலிமை அன்பளிப்படுத்தும் வற்றாத கருணையின் வடிவமாக தத்துவ ரீதியாக விளங்குகிறார். சீரலட்சணம். அடுத்ததாக சீரலட்சணம், அதாவது நம் மகா வித்யாலயத்தில் ஒரு உபாசகனுக்கு இருக்க வேண்டிய தகுதிகள் என்ன? தந்திர சாஸ்திரங்கள் ஒரு சிறந்த சீரனுக்கு 3 முக்கிய லட்சணங்களை குறிப்பிடுகின்றன. முதலாவது பணிவும் சரணாகதி. நாம் பயிலும் வாராகி அனுக்கிரக அஷ்டகத்தில் சர்வ வல்லமை பொருந்திய ஸ்ரீ பரமேஸ்வரனே அன்னையை மாதா என்று அழைத்து
தன் பணிவை வெளிப்படுத்துகிறார். ஈசனே காட்டிய அந்த பணிவே ஒரு சீடனின் முதல் லட்சணம். அகன்று இருக்கும் இடத்தில் ஞானம் தங்காது. இரண்டாவதாக சத்பாத்திரம். நாம் அனைவரும் அன்னையின் அருளை பெற விரும்புகிறோம். ஆனால் அந்த அருளை தாங்குவதற்கான தகுதியுள்ள பாத்திரமாக நம் அகம் மாற வேண்டும். அதற்கு தூய்மையான எண்ணங்களும் சாஸ்திர ஒழுக்கமும் அவசியம். மூன்றாவதாக அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை. குருவின் வார்த்தை மீதும் சாஸ்திரத்தின் மீதும் கொள்ளும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையே சீடனின் பலம். நம் மகாவித்யாலயத்தின் வித்யார்த்திகள் வெறும் மந்திரங்களை மனப்பாடம் செய்பவர்கள் அல்ல. அவர்கள் அன்றாட வாழ்வில் தர்மத்தை கடைபிடித்து தன் நகத்தை தூய்மைப்படுத்தும் உன்னத சாதகர்களாக திகழ பயிற்றுவிக்கப்படுகிறார்கள். நம் வித்தியாலயத்தில் இது எவ்வாறு கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்றால், நம் ஸ்ரீ சண்டி தந்திர மகாவித்யாலயாவில் தனித்துவமே அதன் உன்னதமான கற்பித்தல் முறைதான். இங்கே கற்பிக்கப்படும் லலிதா சகஸ்திரநாம தத்துவங்களாகட்டும் அல்லது வாராகி நவராத்திரி விளக்கங்களாகட்டும் அவை வெறும் தத்துவ பேச்சோடு நின்று விடுவது. பரம்பொருள் எவ்வித அதிகாரமும் இன்றி ஸ்ரீ மாதாவாக நம்மை அரவணைப்பதையும் பின் ஸ்ரீ மகாராஜ்னியாக நம்மை ஆள்வதையும் இதில் இறுதியில் ஸ்ரீமத் சிம்ஹாசனேஸ்வரியாக நம் கர்ம வினைகளை அறுப்பதையும் தத்துவார்த்தமாக நம் வித்யாலயம் நமக்கு ஊட்டுகிறது. அகந்தை எனும் மமதையை அன்னையின் திருவடிகளில் பலி கொடுத்து நான் என்னும் பிரிவினை எண்ணத்தை ஒழிப்பதே உண்மையான உபாசனை என்பது இதில் உபாசகர்கள் உணர்ந்துள்ளனர். உலகியல் ரீதியான கடன்களை தாண்டி பிறவிகள் தோறும் ஆன்மாவை பின்தொடரும் இட விமோச்சனம் எனப்படும் கர்ம கடன்களை அனுப்பெரிய எளிய பக்தியிலேயே முதன்மையானது என்ற உன்னத வாழ்வியல் முறை இங்கே போதிக்கப்படுகிறது. விரைவாக குரு பூர்ணிமா என்பது ஒரு திருவிழா மட்டுமல்ல, அது ஒரு சீடன் தன் ஆன்மீக பயணத்தை பரிசீலனை செய்து தன் தகுதியை உயர்த்தி கொள்ளும் ஒரு நன்னாள். நம் மகாவித்யாலயத்தின் தொலைநோக்கு பார்வையின்படி நாம் அனைவரும் அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையுடனும் தூய்மையான பக்தியுடனும் அகந்தையை விடுத்து அன்னையின் திருவடிகளில் சரணடைவோம். சரணாகதியே நம்மை பற்றாத குருவரின் நிலையில் என்றும் காத்து ரட்சி. இத்தகையதொரு உன்னதமான வாய்ப்பினை எனக்கு நல்கிய குருவர்களுக்கும் விவாகத்தினருக்கும் என் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். ஓம் ஸ்ரீ குருபியோ நமக. ஓம் ஸ்ரீ மாத்ரே நமக. Thank you, Sendilji. That was very thoughtful presentation. Now we have come to the final presentation of today's session. It's my pleasure to invite Vidyārthi Kashi Vishwanath ji, who will be sharing his reflection in Sanskrit language. Welcome, Kashi Vishwanath ji. Pranam Guruvade. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Vande Guru Pada Dvandvam, Avanga Manasa Gocharam, Rakta Shukla Prabha Mistram, Atarkyam Traipuram Maha. Pratamataha, Aham Swaharadya Guru Variyanam, Sri Sai Srinivasananda Gopalan Mahodayanam, Pavana Pada Pankaje, Bhaktya Pranamami. मैं आराध्य गुरुवर्या श्री साई श्रीनिवास नंद गोपालन महोदया साक्षात भगवत्या चंडिकाया कृपा पात्रा सन्ति। तेषा वचनम अमृततुल्यम तेषा आशीर्वाद जीवनस्य दीप तेषां चरणयो मम कोटिश प्रणामः। गुरु पौर्णिमायां पवित्रावसरे आयोज्यमाने अस्मिन् गुरु पूजा महोत्सवे समुपस्थित श्री चंडी तंत्र महाविद्यालयस्य वरिष्ठ स्नातक पूज्य अतिथिजन मम सहपाठिनां च सर्वे युष्माकं हृदय सिंहासने विराजमानाय भगवते चंडिकाये पुनः पुनः प्रणामं समर्पयामि। सनातन भारते गुरुवे देवभक्ति उच्च स्थानं दत्तं यस्मात् कारणात् भगवता संपर्कस्य या भाषा या प्रक्रिया अस्ति सा गुरु माध्यमेन एव प्राप्यते। संत कबीरदास वदति गुरु गोविंद दोखड़े काके लागूपाय बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बतायो। अर्थात चित गुरुवर और गुरु गोविंद च समुत्तिष्ठतः तर्हि प्रथम गुरु वंदे। यथ गुरु मार्गदर्शनेन एव गोविंद साक्षात् भवति। गु शब्द अंधकारम अज्ञानं च वदति। गुरु शब्द प्रकाश
ज्ञानं च वदतु यः शिष्यस्य अन्तःकरणे स्थितम् अज्ञान अंधकारं नाशयित्वा दिव्य ज्ञान प्रकाशं प्रज्वालयति मोक्षमार्गं दर्शयति स एव गुरु इति कथ्यते। गुरु महिमा अपरंपरा संक्षेपेण वक्तुं शक्यते। गुरुं विना मुक्ति नास्ति। कश्चिदपि धर्म संप्रदाय पंथा वा स्यात् गुरु अनिवार्यः। कीदृश शिष्य भवेत्? शास्त्र वदति काकचेष्टा मकोत्थान स्वाननिद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम्। अर्थात काक इव चतुर बक इव एकाग्र स्वान सजग अल्पहारी ग्रहमो त्यागी शिष्य भवेत्। स गुरु पूर्ण श्रद्धां ददात् गुरुवाक्यं मंत्रवत् मनेत् अहर्निशं गुरुसेवां कुर्यात् स एव सदशिष्य भवति। अद्य अस्मिन् धर्मसभायाम् उपस्थिताः सर्वे वयं श्री चण्डी तंत्र महाविद्यालयस्य स्नातकाः स्मः। इयं संस्था ईस्वीये 2023 वर्षे विश्वे भारतस्य सनातन परंपरा शास्त्रतत्त्वञ्च प्रचारयन्तु स्थापितः। अत्र आदर्श स्नातकानां निर्माणं सह उत्तमाना संस्काराणाम् उत्तमाना विचाराणां च दानं निःशुल्क निस्वार्थ ऑनलाइन माध्यमेन क्रियते। शक्ति उपासना दुर्गा सप्तशती अध्ययनम् अस्य महाविद्यालयस्य प्रमुख अंगम्। एतदतिरिक्तं कालभैरवोपासना वटुक भैरव साधना महागणपति साधना चंडी होमम श्रीमद्देवी भागवत पुराण पारायणम सौंदर्य लहरी त्रिशक्ति उपासना इत्यादीना विषयाणां गहनम् अध्ययन अत्र क्रियते। यः कश्चिदपि अस्य महाविद्यालयस्य स्नातक भवति स धन्य भवति, तस्य जीवनं सफलं भवति। अथ वयं सर्वे गुरुन् प्रति कृतज्ञतां प्रकटयाम। गुरु चैव अस्माकं जीवनस्य दीपाः सन्ति। गुरुकृपा केवलं शिष्यपरः। गुरुकृपया नर भवति भवसागर पारः। सर्वेभ्यो गुरुभ्यः पुनः प्रणाम। जय जगदम्ब। धन्यवाद। Thank you, Kashi Vishwanath ji, for your beautiful reflection. With this, we have come to the conclusion of today's Guru Tattva and Shishya Lakshana session. Before we conclude, on behalf of Shri Chandi Tantra Mahavidyalaya, I offer our humble pranams and deepest gratitude to our beloved Guruji, Shri Sai Srinivas Nandagopalan ji. Guruji, we are forever grateful for your boundless compassion in constantly guiding us, nurturing us, and inspiring us to grow, not only in the knowledge, but also in the character, discipline, and the sadhana. Every opportunity that you create for us is an opportunity to introspect, to learn, and to evolve. Today's session is yet another expression of your vision, encouraging us not merely to study the Shastras, but to contemplate them very deeply from within, articulate our understanding, and strive to live their teachings in our daily lives. For this invaluable guidance and for your unwavering commitment to shaping us into sincere seekers, we offer our heartfelt gratitude. Our sincere appreciation also goes to all the faculty members who so beautifully shared their reflections, to every Vidyārthi and participant who joined us on this sacred occasion of Guru Purnima. As we conclude today's program, let us carry these reflections into our lives. May we strive to become deserving recipients of Guru's grace through humility, discipline, sincere sadhana, and unwavering devotion. With our humble pranams at the lotus feet of our beloved Guruji, we conclude today's Guru Purnima special satsang session. Jai Chandi, Shri Mātre Namaha. We will end the session with the closing prayers. Sarvamangala Mangalye Shive Sarvartha Sadike Sharanye Trayambake Gauri Narayani Namostute
जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमोऽस्तु ते दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्तैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणि का त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदा द्रचित्ता श्री सर्वं चण्डी महालक्ष्मी अर्पणमस्तु. Thank you everyone for attending the session.